name is Talia. I'm the CEO and co-founder of Endalogo. So my name is Ruchitka. What I do, I tell stories. The industry that we are in actually gaming, social and creators. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर। वन डे एट गूगल, वन डे एट अमेज़ॉन, वन डे एट फेसबुक। सिंस आई वर्क एट अमेज़ॉन, आई वर्क एट अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, सो आई थॉट एक मैं भी वीडियो बना के देखूं कि एक दिन ऑफिस का किस तरह से स्पेंड करते हैं। तो इस वक्त तो मैं अपने अपार्टमेंट के ऊपर हूँ, तो आगाज़ करते हैं और एक दिन ऑफिस के अंदर आपको दिखाते हैं कि व्हाट डू आई डू यूजुअली और किस तरह से मैं काम वगैरह करता हूँ। फ्राइडे है आज, वैसे फ्राइडे आर मच लाइटर एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वीक, जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है, बट दैट ऑल्सो गिव्स मी सम टाइम टू एक्चुअली मेक दिस व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट। ऑफिस के लिए मैं हमेशा ग्रैब इस्तेमाल करता हूँ। ग्रैब के ऊपर मुझे 20 मिनट लगते हैं घर से ऑफिस। अगर ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक हो तो फिर घंटा भी लग सकता है, बट यूजुअली मैं ऐसा टाइम सेलेक्ट करता हूँ कि जिसके अंदर ट्रैफिक कम से कम हो, बिकॉज मीटिंग्स मोस्टली वर्चुअल होती हैं, तो थोड़ी बहुत आप टैक्सी से भी ले सकते हैं और ऑफिस से भी ले सकते हैं, घर से भी ले सकते हैं। सो उस तरह का इशू नहीं होता। और जिस तरह का मेरा काम है उसमें एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स भी होती हैं, सो मेरा ट्रैवल उस तरह से चल रहा होता है। गाड़ी मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं रखी हुई कि एक तो कंपनी मुझे रिवर्स कर देती है ग्रैब की राइड्स का, सेकेंडली डोर टू डोर सर्विस मिलती है, तो मुझे पार्किंग वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इट्स मच ईजियर एंड मच कन्वीनियंट फॉर मी। तो ऑफिस आ गए हम लोग। गार्डन्स मॉल के साथ नॉर्थ टावर है, यहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं हमारे पास। रोज़ाना का आना होता है, लिफ्ट से ऊपर जाते हैं जी। गाइस हमारे पास यहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं, 26 और 35। 26 इज यूजली फॉर इंटरनल स्टाफ, तो वहाँ तो मैं आपको लेके नहीं जा सकता। 35 के ऊपर कुछ एरियाज़ हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो 35 फ्लोर के ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा ऑफिस का विज़िट करते हैं। के ऊपर यूजुअली एक्सटर्नल इवेंट्स हमारे चल रहे होते हैं डिफरेंट रूम्स के अंदर। अभी एक इवेंट चल रहा है तो मैं आपको रूम में लेके जा नहीं सकता, बट या हमारी काफ़ी सारी टीम्स होती हैं, डिफरेंट सेगमेंटेशन है और हर टीम के डिफरेंट पार्टनर्स के साथ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के ऊपर और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इवेंट्स वगैरह चल रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ कांस्टेंट जो कि यहाँ पे चल रहा होता है। अमेज़ॉन के अंदर 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं। जिस तरह का हर कंपनी का कोई विजन या कोई वैल्यूज़ वगैरह होते हैं, तो हमारे यहाँ 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग अपनी सारी स्ट्रेटजीज़, अपना फ्यूचर के प्लान्स, कल्चर, हर चीज़ जो है इन लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है। आप इसके ऊपर और भी रिसर्च कर सकते हैं, बट अगर मैं इनका बताता चलूँ तो सबसे पहले कस्टमर ऑब्सेशन। कस्टमर ऑब्सेशन के ऊपर कस्टमर कम्स एट द कोर। वी डोंट थिंक अबाउट कंपटीशन, वी डोंट थिंक अबाउट अदर प्लेयर्स इन इंडस्ट्री, वी ऑलवेज थिंक अबाउट कस्टमर्स। अगर आप कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो यू आर डूइंग योर थिंग। इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड ना करें चीज़ों को, ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ, सिंपल प्रोसेसेस हों जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, और ऑलवेज हैव दैट इन्वेंशन इन प्लेस, दैट क्रिएशन माइंडसेट। आर राइट अ लॉट। सो ये बेसिकली लीडर्स आर राइट अ लॉट के ऊपर है कि आपके डिसीजंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ठीक होने चाहिए, सही होने चाहिए। सो आप डाटा पॉइंट्स को सही तरह से एनालाइज करें और उसके ऊपर आप डिसीजन लें। ओनरशिप इज ऑल अबाउट रादर देन रिलाइंग ऑन अदर पीपल, अदर कोलीग्स, एक्सटर्नल और इंटरनल पार्टनर्स और व्हाट नॉट। आप खुद ओनरशिप लें, खुद एक्शंस लें, खुद प्रोजेक्ट्स की लीड लें। इंसिस्ट ऑन हाई स्टैंडर्ड्स रादर देन जी काम मुकाओ, आपने हाई स्टैंडर्ड्स के साथ चलना है। थिंक बिग, ऑलवेज थिंक अबाउट स्केल, हाउ यू कैन upgrade, learn and be curious. Learning is a constant thing. Nobody is an expert. Hire and develop the best. Obviously जब तक आपके पास right skill set, right talent नहीं होगा तो आप किस तरह से scale, grow और sustain करेंगे। Earn trust,
ट्रस्ट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट अपने कोलीग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट को अर्न करें। जब आपके पास ट्रस्ट होगा तो इट्स ईजियर टू डू अदर थिंग्स। बायस फॉर एक्शन, इफ यू हैव इनफ डेटा पॉइंट्स, डजंट नीड टू बी 100% correct, you go and you act on them. Dive deep, data tells you a lot, but they are anecdotes as well, but data की base के ऊपर आप decision लें। Frugality, do not spend more than it is required. Always have that frugal mindset in place. अच्छा जी, strive to be Earth's best employer, अपने employees का ख्याल करें। जब तक आपके employees खुश नहीं होंगे, जब तक आपके employees comfortable नहीं होंगे, तो आप किस तरह से as a company grow करेंगे। Success and skill bring broad responsibility. Amazon ने इस वक्त 1.5-1.7 million लोग hire किए हुए हैं, so that is a huge scale. So obviously with scale, there is a huge responsibility to create the right impact globally. Have backbone, disagree and commit. अच्छा जी, कभी आपके लीडर ने कभी आपको कहा कि यार आपने काम इस तरह से करना है, और आप disagree कर सकते हैं, और लेकिन disagree करके आप commit भी करें। So backbone का मतलब कि do not say yes all the time. You can say that I disagree with it, but let's do it your way. Deliver results. यानी कि जो भी आप कर रहे हैं at the end इसके results निकलने चाहिए। तो ये हमारे जी 16 leadership principles हैं जिनकी बेस के ऊपर Amazon जो है ऑपरेट कर रहा होता है। ये हमारा ओपन एरिया है, यहाँ पे जब हम इवेंट्स वगैरह करते हैं तो लोग आके बैठते हैं और थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। आज शाम में भी हमारा इवेंट है, एक्चुअली हमारा स्टार्टअप का इवेंट है, सो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा कवरेज वगैरह दूंगा। बाकी ये फ्रिजेस वगैरह के अंदर जूसेस वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, ये जो एक यूजुअल स्नैक्स वगैरह चल रहा होता है। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बताऊं कि मैं एक्चुअली अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में क्या करता हूं। तो आई एम बेसिकली पार्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट टीम एट AWS स्टार्टअप्स। सो मैं बेसिकली स्टार्टअप्स के साथ इंटरैक्ट करता हूं थ्रू अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है, अकाउंट मैनेजमेंट की टीम है और सोल्यूशन आर्किटेक्ट की टीम है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट इज़ ऑल अबाउट टेक, अकाउंट मैनेजमेंट स्टार्टअप के अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। तो मैं बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एक्सीलेटर्स, इंक्यूबेटर्स जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट आर फोकस्ड ऑन स्टार्टअप्स। इन सारों के साथ काम करता हूँ और इनके स्टार्टअप पोर्टफोलियो को सपोर्ट करता हूँ थ्रू AWS। Since I'm an ex-founder, I worked with Kareem, which is a unicorn of Middle East. अपना भी मैंने स्टार्टअप किया हुआ है, so all that relevancy AWS saw and they reached out to me for this particular position. So I love my work. मेरी external engagements होती हैं, events होते हैं, different VCs के साथ, different startups के साथ, founders के साथ discussions होती हैं, new technology के ऊपर बातें होती हैं, क्या ये लोग कर रहे हैं, how we can support them. So all of that, I mean, that's right up my alley and I really enjoy doing my work. We are having an event और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक इवेंट हम लोग करते हैं मंथली फ्राइडे के दिन, ऑसम फ्राइडे के नाम से, जिसमें हम स्टार्टअप्स को, फाउंडर्स, VCs, डिफरेंट लोगों को बुला रहे होते हैं और कनेक्ट करते हैं अंडर वन प्लेटफॉर्म। सो कुछ लोगों से मैं आपको मिलाता हूँ और इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ। सो गाइस, वी हैव Rachel over here from P-Tracks. Rachel came first time on our Awesome Friday and I will ask her to tell what she does to all of you. So Rachel? Sure. Hello everyone, I'm Rachel from P6. Pleasure meeting everyone here. This is my first time at AWS's Awesome Fridays networking event and it's been great so far. Good food, good drinks and more importantly, great people like Gazik. And yeah, I think it's such a good experience. If you haven't been here, you should come here and meet new people, expand your network. Gazik's awesome guys to speak to. See you there. Awesome. Thank you Rachel, thank you for coming over. Cheers. 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 Guys, we are here with Thalia. Thalia is actually one of Antler founders, just like me. She's from SG12 cohort, right? Yes. And I was from SG1 cohort, as you can see with my white hairs and whatnot. But Thalia has started a new startup based over here in Malaysia. So I will, just ask her what she does. Off to you. Hi everyone, my name is Thalia. I'm the CEO and co-founder of AndTheLoco. AndTheLoco is a one-stop end-to-end study abroad platform, which means that we automate and streamline the whole study abroad process, and at the same time, we create content for universities to justify the whole student recruitment. Awesome, awesome. And what stage you are on right now in terms of your startup? So we launched our MVP in March this year, and we currently have around 1,300 users. Wow. And generated 20,000 in revenues.
I'm currently racing our seed round. And just a side note, we got accepted to UCL EdTech Accelerator Program. And Awesome. 25 startups were selected, and we were one of them. So yeah, super excited for that. Amazing person, guys. I'll share the details on the channel. Connect with her, link up, and support the ecosystem. Thank you, Dalia. Thank you. I'm here with Brenna. Yes. This is your second Awesome Friday, or My first one. this is our first Awesome Friday, but she came on our Women Entrepreneur event that happened on a Saturday. Correct. And she was one of the panelists, great energy, and I wanted to, introduce all of the viewers what she does, what she's building. So she's a woman founder, that is super great. But over to her in terms of introducing, telling us what she does. Hi guys, so I'm Brianna from Path Now actually. So we actually focus on a few sectors, mainly on the Web3 side. The industry that we are in actually gaming, social and creators. A more fun industry, we wanted more creativity in there and all. So what we do is we actually kind of like a venture labs. We build products, we find the main pain point of humans, people, and then we deploy MVPs just to solve the problems. What is the main pain point of humans? We focus on three key things: gaming, social, and creator. Yeah. So the more fun one that I would say, I think I spoke to you before, which is we are focusing the social part of it. That we are focusing is we are exploring some sort of like physical and online meetups, like what AWS Bytes is doing. But we are focused on dating at the moment. So you have heard from her, you've seen her energy, and she's amazing person to work with. And I mean, we are super proud that we can support the ecosystem in whatever way possible. So you can reach out to us, and I'll share the link of her startup as well. If you want to explore or reach out to her on LinkedIn, she's very responsive. You can do that as well. Yeah. Thank you very much. Thank you. So guys, I'm here with Richard Kerr. Richard is a good friend. We met like a couple of months back when I joined AWS, and he's super passionate about Malaysia, the startup ecosystem, overall the economic growth. He's an influencer. He has a lot of following on Twitter, Facebook, and also LinkedIn. And he shares great insights, not just about Malaysia, but globally as well. So do follow him up. I'll share the link. But right now, Richard, over to you. Introduce yourself and tell us what do you do. Yeah, sure. Hi guys, thanks for inviting us for this event tonight. So my name is Richard Kerr. So what I do, I tell stories. I tell stories about entrepreneurs, businesses, technology, marketing, anything that we need today, right, in the digital space. I also share about things related to mindset, because I believe running a business, you need to have the right mindset. Absolutely. Right? And I don't think it's just for business, it's also for your life, your career, right? So I share a lot of these things on my platforms. So at the same time, I also help companies to tell their stories. We help a lot of small businesses, emerging companies to create content for their social media. Because we believe that you need to build a strong digital presence if you want to make yourself relevant today, especially in this digital world, right? Yeah. So that's what I do in essence. Amazing. And he talks also about personal branding, like you mentioned about stories. I mean, everybody has these stories. That's right. So can you share a couple of tips for people that are starting? A lot of people reach out to me, guys, how I can, post on LinkedIn or post on other social media platforms about things I do, even if they are jobless. I mean, what are few of the pointers that you would give to the people to where actually start off from? Yeah, I think one of the struggles for most people that I talk to, they said they do not know what to tell, right? But I believe everyone has a story. So think about every day, when you wake up in the morning until you settle down in the evening, think about what is that story that you believe it's worthy to be shared, to tell to people, right? Whether it's inspiring, whether it's educational, or sometimes even if it's entertaining enough. Yeah. So think about from this perspective. So if you're able to track one story a day, so within a month, you would have 30 stories that you can tell. Exactly. And you just have to be yourself, right? Yeah. Tell that story from your angle, from your own perspective, using your own personality. And you can just start, just post it on your LinkedIn, on your Facebook. But LinkedIn is a good place because that's where all the businesses are. Yeah. But you can leverage on all these different social media platforms that are
available to you at no cost. Right, so that's the easiest way to start. Yeah, and the important thing is, guys, I mean, just start. Yes, exactly. I mean, sometimes it will be embarrassing, sometimes you will not get the engagement, so don't worry about it. Yeah. I started like 4 or 5 years ago and nobody used to, follow me at all, but eventually, You will get there. You'll yeah, get there. definitely. But I mean, I'm not going to take Richard's more time. I mean, you should follow him on different platforms. He shares a lot of insights rather than keeping him up over here. I mean, he is here for food and drinks and networking with a lot of amazing people. So thank you so much, Richard. Thank you, guys. And Yep. I'll see you around. Yep, see you around for sure. Thank you. Okay, guys. सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। रात के 10:30 बज चुके हैं, सुबह 8-9 बजे का मैं आया हूँ। फ्राइडे ऑब्वियसली काम वगैरह भी था, बट एक इवेंट भी था। होपफुली आपको मेरे इंटरेक्शंस यहाँ के लोकल इकोसिस्टम के फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी अच्छे लगे होंगे। और ये मेरी बेसिकली लाइफ है। डे इन अमेज़ॉन, दिस इज़ व्हाट इट इज़। इट्स नॉट ऑल खाने खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, योगा हो रहा है, मसाज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। प्रॉपर काम हो रहा है सुबह से रात तक। हसलिंग है, ऑब्वियसली लर्निंग है, एक्सपोजर है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। और अब फ्राइडे नाइट को रात के ऑलमोस्ट 11 बजे मैं घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। सब्सक्राइबर्स कम है यार मेरे। पहले मैं सोच रहा था कि यार सब्सक्राइबर्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक करना चाहिए, बिकॉज सब्सक्राइबर से ये होता है और बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस देखते हैं और उससे लर्न करते हैं। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी मैं ग्रैब मंगवा रहा हूँ घर के लिए, होपफुली मुझे मिल जाए। बट एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। एक और ब्लॉग में एक और टॉपिक के साथ होपफुली बहुत जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।